Dear friends, to information. Information number one. Today we are going to start pattern diagnosis class from Spleen Meridian onwards. Wood means liver and gallbladder already has been discussed with a presentation. Fire, in the fire, heart and small intestine already discussed with a presentation. You need to see that videos, but suppose few person have not seen the videos. But no problem. Today we are starting a new topic, so you will be able to understand. The name of this topic is Spleen Meridian. The patterns of the spleen meridian. Now, information number two. We have made another headings in a course with the name of 14 meridian, where we are going to upload all the meridian videos. And you can see there without any problem. Right or not? Yes, you can see there. आप वीडियो देख सकते हो सारे. So we will not send that video in the WhatsApp group because few student has sent me WhatsApp message. Please send in the WhatsApp group. That is not possible. Okay. So currently I have uploaded 5 videos. You have to see the 5 videos before Thursday. The video like 29 minute, 35 minute, like that video. Okay. So you have to see the 5 video before Thursday, so that we can have discussion on the Thursday. And when I will discuss on the Thursday, if I found that you are asking the question very means you have not seen the video, then I will not allow you. You have to see that video, then I will conduct the class on the Thursday, then you can ask the question. But you're not seeing the video, you're just asking where is the lung 1, where is the lung 2, then I will not reply a question. It means you have not, then you will tell, sir, I'm busy, I went to here and went to there, so I couldn't see the video. That is not my problem, right? You have to manage your time. You have to manage your time and you have to see the video. If I found that you are asking any question without seeing the video, you are not eligible to ask any questions. Okay. Because otherwise you will ask a very basic question, which you should not ask. Means you can ask any question, basic question also, but first you have to see the video, then you can ask whatever you want to ask. Okay. To information over. So now we are coming back to our this pattern diagnosis class. One more thing I want to tell you. That video of 14 meridian is for PG diploma student. Okay. Not the pattern diagnosis student. Okay. Fine. So now we are going to start spleen meridian. Quickly, I will show some few things about the spleen so that you will understand very quickly. हम स्प्लीन के बारे में थोड़ा सा जनरल एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके पैटर्न की बात भी कर लेंगे. We know spleen is the organ located near to stomach.
स्प्लीन को एलोपैथी में कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कहते हैं स्प्लीन, इफ स्प्लीन इज गिविंग प्रॉब्लम देन कट द स्प्लीन एंड थ्रो आउट, एज पर द मॉडर्न साइंस देयर इज नो रोल इन ऑफ स्प्लीन। Yeah, even they have they are also considering the spleen as a lymphatic organ। स्प्लीन को एक तो माना गया लिम्फेटिक ऑर्गन जो हमारे शरीर की क्लीनिंग करता है, सफाई करता है। दूसरा, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टीसीएम ट्रेडिशनल acupuncture, व्हेन वी टॉक अबाउट spiritual science, in the spiritual science also we have spleen chakra. In the TCM also we are having spleen meridian. Spleen is a very, very important thing. Even I will tell you, most of the disease having some involvement of the spleen. Most of the disease. Spleen is very, very important in the human body. हमारे शरीर में स्प्लीन का बहुत महत्वपूर्ण है। If I tell you, we can compare the spleen like a fountain water. We can see this fountain water. So the water from the fountain going with great pressure upward. हम देख सकते हैं कि पानी कितना तीव्र प्रेशर से ऊपर की ओर जा रहा है। स्प्लीन यही काम करती है। स्प्लीन इज लिफ्टिंग all the thing upward like this fountain water. Spleen is lifting everything upward. If my spleen is strong, I will sit like this. If my spleen is weak, I will not able to lift my body and I will sit like this. Spleen is responsible for lifting action, upright action. You want to keep your spine straight. योग में कहते हैं ना, keep your spine straight. And if you want to lift everything up, spleen play very, very important role. Okay, so this is a very, very important action of the spleen. I am just discussing generally so that we can understand more about the spleen. बहुत सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, शायद एक बार क्विकली मैं बता दूं आपको। दो तरह की लार बनती है, देयर आर टू टाइप ऑफ लार, पतली लार और मोटी लार। पतली लार का संबंध स्प्लीन से है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सलाइवा, थिन सलाइवा एंड थिक सलाइवा। Thin saliva is coming because of the spleen dysfunction. The too much saliva is dribbling down. अगर बहुत सलाइवा नीचे गिरता है तो हम कहते हैं कि स्प्लीन में कुछ प्रॉब्लम है। So spleen also having connection with the saliva. जब थिक सलाइवा बनता है तो वो किडनी से बनता है। Like we have seen mental retarded kids. The mental retarded kids, they also having the salivary formation, but it is the thick saliva. Okay. तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्प्लीन के बारे में है। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम very, very basic thing about the spleen and let's move step by step. हमारे शरीर में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक वह ऊर्जा जो हम माता पिता से लेके आते हैं जन्म के समय। वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ द एनर्जी। वन एनर्जी वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम पेरेंट्स, टू टाइप ऑफ जी। So
bringing from parents. And another energy we are getting after birth from either food or air. So the bringing from parent, why birth? कुछ एनर्जी हम पेरेंट से जन्म से लेकर आते हैं. Got it? This is called prenatal chi. And we are getting the energy from the food and the air. This is called postnatal chi. इसे हम postnatal chi कहते हैं. Got it? So suppose you are eating the food, you are eating the fresh foods, you are eating the vegetables, you are taking lots of protein, you are taking lots of supplement, you are drinking milk, cow milk, buffalo milk, whatever. But still you are having some deficiency. अरे मैं इतना हेल्दी खाना खाता हूँ लेकिन फिर भी विटामिन B12 कम है, फिर भी कमजोरी लगती है. So eating healthy food is not only enough. मुझे अभी भी ध्यान है, बचपन में मैं देखता था. I was staying at some home, और वो भैया थे एक वन ब्रदर, he was going for job. Morning he was not taking anything and he was bringing टिफिन में और नमक दो रोटी और नमक और लेके जाते थे बस. और एकदम हेल्दी. He was very healthy. Even he was taking lunch, chapati and salt. I was so surprised how he's getting nutrition. And he was not having any problem. He was very, very dynamic, good thinker, problem solver. कोई गरीब नहीं थे, टाइम नहीं था बनाने का उनके पास, अकेले रहते थे. Okay. So even the person eating less nutritious food, if spleen is good, it will digest the food and it will convert the food in the food chi. So what I want to tell you, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, अगर आपकी स्प्लीन कमजोर है तो आपके अंदर वीकनेस रहेगी. The lots of rich person, they are having all types of the dry fruits in the home. They are having all types of the fruits in the home, expensive things in the home, but still they suffer with the weakness, tiredness. Why? You are eating the good food, but still, if spleen is weak, then you will not able to digest the food. तो फूड अकेला हमारी बॉडी को नरिश नहीं करता. फूड इज नॉट नरिशिंग. इट्स ए एबिलिटी ऑफ स्प्लीन. It is the ability of the spleen that transform the food in, and that food will nourish the body. यानी बिना स्प्लीन के फूड हमारी बॉडी को नरिश नहीं कर सकता. Got it? So we can consider spleen is a very, very important organ of the human body. If the spleen stop working, अगर स्प्लीन ने काम करना कम कर दिया, then we are going to suffer with a lots of type of the deficiency. Got it? तो कहते हैं कि हमें जो प्री नेटल ची मिलती है, द प्री नेटल ची, whatever we are getting from the parents,
सो प्री नेटल ची इज डिटरमाइनिंग अवर प्रकृति, हमारी प्रकृति क्या है, वाता पित्त कफा और द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि बचपन से हम एक प्रकृति लेकर आते हैं। एंड प्री नेटल ची ऑल्सो डिसाइडिंग अवर इनहेरिटेड स्ट्रेंथ, कि हमारे अंदर एक एक माता पिता से एक स्ट्रेंथ मिलता है, लॉन्गेविटी, इवन द फर्टिलिटी, ये हमारी, और इवन द कंजेनेटल हेल्थ। सपोज सम fetus is having some problem in the mother womb, there is a problem with the prenatal chi, कि माँ के गर्भ में कोई प्रॉब्लम हो गई या जन्म के तुरंत बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो प्रीनेटल ची की प्रॉब्लम है। सो प्रीनेटल ची स्टोर्ड इन द प्रीनेटल ची। प्रीनेटल ची का मतलब है वो ची, वो ऊर्जा जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती है, द एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम अवर पेरेंट्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द postnatal chi, the another chi, postnatal chi, either we are getting from the food or getting from the air, हम श्वास लेते हैं। So when we are eating the food, it is processed by spleen, and when we are breathing, so this process is done by lung, and the prenatal chi is stored in kidney। तो ऊर्जा के हमारे शरीर में 3 स्रोत हैं, किडनी, स्प्लीन एंड लंग। किडनी इज the storehouse of prenatal chi, and spleen and lung are connected with the postnatal chi. Spleen is having connection with the food chi, and lung is having connection with the air chi. ये हर एक प्रकार की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है। Like I will give an example, one person doing pranayama, and just by the improving the air chi, the quality of the air chi, he can improve the health. One person taking very good food, nutritious food, and the food which is liked by the spleen, spleen can digest the food, then person will be having good benefit in the health। तो 3 हमारे शरीर में ऐसे मेरिडियन है, किडनी, स्प्लीन एंड लंग, दे आर हैविंग कनेक्शन विद द एनर्जी, विद द chi। तो इन दोनों को हम बोलते हैं पोस्ट नेटल chi। नाउ आई वांट टू मेक द chi आफ्टर बर्थ, और आई वांट टू मेक द ब्लड आफ्टर बर्थ, whether I want to make the chi or the blood, I am dependent on the postnatal chi, lung and spleen। यही कारण है कि जब कहते हैं कि भाई ब्लड की कमी हो गई है, तो हम देखते हैं भाई स्प्लीन काम गड़बड़ कर रही है क्या। ओके, सो नाउ सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे। सपोज someone eating the food, this food is reaching to the stomach, खाना खाया और स्टमक में गया, then digestion starts in the stomach, digestion starts, हमारे स्टमक में खाने का डाइजेशन चालू हो जाता है। ओके, then spleen is doing extraction, spleen is taking the essence from this food, spleen do extraction, spleen extract the nourishment। खाने में जो भी अच्छी चीजें होती हैं उसे स्प्लीन ले लेती है, एंड विद द हेल्प ऑफ स्प्लीन दिस गेट ट्रांसपोर्टेड। सो वी आर ईटिंग द फूड, एंड विद द हेल्प ऑफ स्प्लीन इट इज बिकमिंग फूड ची। हमने खाना खाया और खाने को स्प्लीन ने फूड ची में कन्वर्ट कर दिया। द रिमेनिंग मटेरियल, द रिमेनिंग बेस्ट प्रोडक्ट
are moving forward in the next part of the intestine. बचे हुए जो भाग हैं वो आंतों के दूसरे भाग में जाते हैं, फिर वहां पर काम चालू होता है। हम स्प्लीन की तुलना कर सकते हैं एक, सपोज हमने पानी को गर्म किया, वी आर हीटिंग द वाटर, नाउ we are heating the water in the stomach, for example. Now there is a formation of the steam. Steam is very fine, refined product. स्टमक में हम अपने पानी को उबाला, अब उससे बहुत ही शुद्ध भाप बनी, वो भाप हमने ट्रांसपोर्ट कर दी। सो दिस भाप इज फूड ची। सो whatever is in the stomach, that is food. We are eating chapati, we are eating dal, we are eating rice, we are eating fruits or dry fruit, these all are food. But when we are making very fine, refined मटेरियल, दैट इज द फुर्ची, उसे हम कहते हैं फुर्ची। इसी का दूसरा नाम है गुची, GUCI। सो द अदर नेम ऑफ द फुर्ची ऑल्सो कॉल्ड गुची। फुर्ची और गुची। GUCI। गॉट इट? सो इन दिस वे, गुची का मतलब क्या है? गुची का मतलब है कि कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, और फिर जो फाइन प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, उसे हम कहते हैं गुची। वी कैन कंसिडर कि गुची भी जो होती है ना, वो जैसे अभी हमने क्या किया कि हमने गेहूं लिया और गेहूं को पीस दिया तो आटा बन गया, तो वो गुची वो आटा है। क्योंकि रोटी अभी बनना बाकी है, रोटी बनने के लिए भी और प्रोसेस होगा आगे जाके। गॉट इट? लेकिन आटा तो चाहिए। सो फर्स्ट वी आर पुटिंग द समथिंग लाइक ग्रेन्स इन द स्टमक, देन वी आर ग्राइंडिंग इट। हमने ग्रेन्स को ग्राइंड किया, एंड वेरी फाइन ग्रेन्स वी आर टेकिंग, दैट इज द गुची, दैट इज द फुर्ची। बट स्टिल अभी चपाती बनना बाकी है, अभी बनेगी आगे जाके, अभी बनी नहीं है। अब इसमें और भी रिफाइनिंग प्रोसेस होंगे, है ना? चपाती बनेगी, फिर चपाती को सेका जाएगा, अभी सब प्रोसेस बाकी है। सो वेन स्प्लीन इज मेकिंग गुची, इसे कई लोग ग्रेन ची भी कहते हैं, ग्रेन ची। देन इट इज कमिंग इन द चेस्ट कैविटी नियर द लंग्स। यही गुची हमारी छाती में आती है। कौन लाता है? स्प्लीन लेकर आती है। स्प्लीन इज ट्रांसपोर्टिंग दिस गुची और द ग्रेन ची और द फूड ची टू द चेस्ट कैविटी। Now, in the chest cavity, we inhale the air and mixing this air chi. Now, there is a combination of two energies, air chi and the food chi, in the chest cavity. हमारी छाती में यह ऊर्जा पहुंची, so spleen is sending this food chi
to the chest cavity. और छाती में अब इसमें मिल गई एयर ची। और दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, फूड ची प्लस एयर ची इन द चेस्ट कैविटी. दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड झोंग ची. इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं झोंग ची. ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है. हमारी छाती को प्रोटेक्ट करने वाली ऊर्जा को कहते हैं झोंग ची. वी आर हैविंग पेक्टोरलिस मसल हियर. दिस इज द पेक्टोरलिस मसल. The pectoralis muscle having strength which is coming from the झोंग ची. If the spleen is weak or the lungs are weak, your chest will become weak, your pectoralis muscle will become weak. Whatever inside the chest cavity, it is getting the strength from this झोंग ची, which is made by air chi and the food chi. तो छाती को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है, आपकी पेक्टोरलिस मसल को स्ट्रांग बनाना है, आपकी आवाज को बुलंद बनाना है, बिकॉज whether you want to produce the voice or you want to strengthen your heart, you want to make strong your chest cavity, you have to work on the झोंग ची. आपको चाहे किसी की आवाज पर काम करना हो, किसी की आवाज को ठीक करना हो, किसी के हार्ट को मजबूत करना हो, किसी की छाती के मसल को स्ट्रेंथन करना हो, तो आपको झोंग ची पे काम करना पड़ेगा. सो झोंग ची इज द एनर्जी who are inside the chest cavity, who is the combination of the food chi and the air chi. It support breathing. हमारे छाती की जितनी भी एक्टिविटी है सब झोंग ची के द्वारा होती है. वेदर यू वांट टू टेक द ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, or your heart want to pump the blood, or we want to speech with a good strength, heart want to circulate the blood, इन सबके लिए हमारी झोंग ची जिम्मेदार है. झोंग ची is responsible for these all things. Now someone is telling I am feeling weakness in my heart, weakness in my chest, I don't want to speak, I am very tired. Maybe you have to work on the झोंग ची. You have to do the diagnosis, proper diagnosis. क्योंकि कोई बोलना नहीं चाहता, कई बार वो हार्ट की कमजोरी से भी होता है. Or like we are tired, our heart chi got deficient. But remember one thing, if you want to sing the song, or you want to command the people, or you want to speak with a very good strength, your झोंग chi should be good, which is lives in the chest cavity, जो हमारी छाती में निवास करती है. When the food chi is combining with the air chi, जब food chi air chi के साथ combine करती है, so there are two energy are gathering together. Got it? Two energy are gathering together. That's why we are also giving this another name, gathering chi. इसी का अलग नाम है गैदरिंग chi. गैदरिंग मतलब हमने दो ऊर्जाओं को गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया है. तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप जब प्रोटोकॉल का निर्माण करोगे और आपको लगे कि इसको छाती की कमजोरी है, तो आप मत भूलिएगा लंग को और स्प्लीन को दोनों. डू नॉट फॉरगेट लंग एंड स्प्लीन. नाउ झोंग ची इज गुड, but kidney is having some other plan. किडनी के पास दूसरा कोई प्लान है. देखो, जब भी कोई ऊर्जा दूसरी ऊर्जा से मिलती है तो और फाइन और रिफाइंड हो जाती है. सो सपोज इनिशियली इट वाज फूड ची, व्हेन इट गेट मेड विद द एयर ची इट बिकम रिफाइंड. अब इसकी और रिफाइनिंग होगी, फर्दर रिफाइनिंग. So the further refinement happened when the झोंग ची is meeting with the
अब और प्री नेटल ची, हमने कहा 3 प्रकार की ऊर्जा है। 2 है लंग और स्प्लीन से, और एक है किडनी से। अब क्या किडनी ने क्या किया, किडनी ने किया कि हम झांगची को और रिफाइन कर देते हैं। लेट्स डू द सुपर रिफाइनिंग ऑफ द झांगची। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, झांगची इज कंबाइनिंग, ये हमारी झांगची है। इसको किडनी की ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं युआनची, किडनी की ऊर्जा युआनची से कंबाइन कर दिया जाता है, तब एक बहुत ही सुपर रिफाइंड एनर्जी का निर्माण होता है। दैट इज कॉल्ड ट्रू ची। उसे हम ट्रू ची कहते हैं। इसे हम बहुत ही सिंपल उदाहरण से हमेशा समझते आए हैं कि जैसे आपने आपके आपकी सब्जी तैयार है, फूड ची और एयर ची दोनों के कॉम्बिनेशन से। मान लो दाल तैयार है, आपकी दाल तैयार है, आप दाल को पी सकते हो, लेकिन किडनी लगाती है उसमें तड़का, तो बनती है दाल और टेस्टी। तो ऊर्जा हमारे पास पहले भी बन गई थी जोंग ची, लेकिन जैसे किडनी का तड़का लगा, अब बन गई जबरदस्त। अब so this become very fine and refined, super refined energy chi. That is called true chi. इसका क्या नाम है, ट्रू chi। यही वो ऊर्जा है जो अब मेरिडियन में घूमेगी। कहाँ घूमेगी, मेरिडियन, क्योंकि मेरिडियन में क्या बहती है, ऊर्जा बहती है। What is flowing inside the meridian? In the lung meridian, the large intestine meridian, the liver meridian, the kidney meridian. What is flowing? Chi is flowing. So that chi is very fine and refined form of the chi. But the chi has made like this. फॉर्मेशन उसका इस तरह से हुआ है कि पहले हमने खाना खाया, फिर हमने सांस ली, और किडनी ने भी अपनी ऊर्जा डाल दी। तो इन 3 ऊर्जाओं के कॉम्बिनेशन से जो एक फाइनल, एक जो ऊर्जा का निर्माण हुआ, उसे हम कहते हैं टू ची। वही हमारे सारे मेरिडियन में फ्लो करती है। दैट ची इज फ्लोइंग इनसाइड द मेरिडियन। गॉट इट। सो इन दिस वे, हालांकि ये चीज हम कई बार पहले भी समझा चुके हैं, इसलिए ये तो सब पता ही होगा ना आपको सबको, जो मैं बता रहा हूँ, पता है ना सबको। सो इन दिस वे, स्प्लीन को कहते हैं, चाइनीज एक्यूपंक्चर में हर ऑर्गन को एक गवर्नमेंट ऑफिसर बना दिया गया है, या कोई एक संज्ञा दे दी गई है भाई। हार्ट इज द एम्परर, लंग इज द प्राइम मिनिस्टर, मतलब ऐसे ऐसे। हार्ट एम्परर है, लंग प्राइम मिनिस्टर है, लिवर इज द ग्रेट फाइटर, ग्रेट जनरल, है ना। स्प्लीन की बात करते हैं। स्प्लीन इज द ग्रेनरी ऑफिशियल, ग्रेनरी ऑफिशियल, यानी जो हमारा भोजन भंडार है, उसकी ऑफिशियल है स्प्लीन, है ना। भोजशाला,
स्प्लीन हमारा वो सेफ है, सेफ ना, सेफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं क्या? समझ लो भाई, भावनाओं को समझो। ओके, प्लीज राइट व्हाट इज स्प्लीन। मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, ऑफिसर। हाँ, लिख रहा हूँ, पर पेन आपने चली। क्या क्या बोला वो समझ नहीं आया, कौन सा ऑफिसर? स्प्लीन को क्या कहते हैं? देख लीजिए, एक अच्छा, मिनट। ग्रैनरी। ग्रेनरी ऑफिशियल। ग्रेन, ग्रेन जानते हैं ना? ओके। ग्रेन क्या होता है? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, सारे ग्रेन्स होते हैं। सो स्प्लीन इज द ग्रेनरी ऑफिशियल। गॉट इट? या, यस, थैंक यू। सो इन दिस वे स्प्लीन इज स्टोरिंग द फूड एसेंस। हाँ भाई, तो स्प्लीन का काम है ग्रेनरी ऑफिशियल। हमारे जो स्वाद होता है ना, स्वाद, तो ग्रेनरी ऑफिशियल क्या करता है, घूमता रहता है। जैसे वो एक हमारे वन वन ऑफिशियल केम फ्रॉम द अमूल डेयरी, he become very obese and he was diabetic. He told, I am officer and I have to test everything whether this is appropriate or not. Okay, okay, the Srikhand is the firm Srikhand is going on, so they are going and testing whether the everything is right or not, sugar is okay or not. Or on the one side there is Srikhand, on the other side there is a ice creams, on some other side the various variety of the Amul milk products are forming. तो उसे बार बार टेस्ट करना पड़ता है कि भाई आइसक्रीम कैसी है। उन्होंने कहा कि वीक में एक बार हमें बुला लिया करो, हम टेस्ट करके बता देंगे कौन सी चीज कैसी है। तो देखा, आओ कभी भी आओ। ओके, तो स्प्लीन ऑल्सो हैविंग कनेक्शन विद द टेस्ट, स्वाद। अगर किसी का स्वाद चला जाए, स्प्लीन कमजोर है। सपोज इन द कोविड पेंडेमिक someone lost the test, or suppose someone is suffering with some problem, he is not getting good test, there is a problem with the spleen। तो हम तो कहते हैं कि कोई आपके खाने की तारीफ ना करे तो उसको बोलो अपना स्प्लीन ठीक करो भाई, हमारा खाना अच्छा बना है, खाने में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे स्प्लीन में कमी है, जो कुछ भी कमी है। इफ योर स्प्लीन इज गुड, you will definitely, you will tell food is tasty. But if you're not telling food is tasty, means your spleen is not healthy. Got it? हाँ हाँ हाँ, जो भी। So in this way, very important thing I want to tell you now, मैं आपको बहुत ही एक important चीज बताने बताने वाला हूँ। That's why if spleen is the very important source of the energy in the human body. That's why digestion is very important thing in the human body. Why? Sorry, आपने सही बोला आशा जी, आपने सही बोला आशा जी। ठीक है, हस्बैंड के लिए ये हो, और किसी के लिए नहीं है। ओके, सो इन दिस वे इफ द स्प्लीन इज वीक, अगर स्प्लीन कमजोर है, then person will be having tiredness,
पर्सन विल बी हैविंग ब्लोटिंग, खाने के बाद उसका पेट फूलेगा, ब्लोटिंग, स्पेशली आफ्टर मील, क्योंकि अब खाना खा लिया, स्प्लीन को अपना काम करना है, स्प्लीन शुड वर्क बट स्प्लीन इज नॉट एबल टू वर्क, स्प्लीन इज वीक, person will be having poor appetite, he will not feel hungry, and he will suffer with the anemia or the low hemoglobin. Okay, in this way spleen play a very important role. Some complicated thing happening because of the weakness of the spleen, that is edema or swelling. हमारे शरीर में जो सूजन आती है और जो edema होता है, that is because of the weakness of the spleen. Now हमारी मसल स्प्लीन से बनती हैं. Suppose some patient is coming with a motor neuron disorder, some patient is coming with some muscles problem, and there is a wasting of the muscle, atrophy of the muscle, कहीं की muscle पतली हो रही है, thin हो रही है, or someone is going for gym workout but he is not developing muscles. कोई आके बोलेगा मैं कितनी भी एक्सरसाइज करूं मेरी मसल नहीं बनती, it means person is suffering with the weakness of the spleen. So muscle weakness is the result of weak spleen. Got it? If the spleen is weak, person will get loose motion. Very important thing. Because the action of spleen lifting upward, हमारी spleen का काम है ऊपर की तरफ lifting action करना. But the spleen is weak, then person will not able to lift the things upward and person will suffer with the loose motion. Even the spleen is weak, person will not able to hold the blood, so there will be bleeding. And if spleen is weak, person is not able to hold the organs, and we can see multiple prolapse of the different organ like uterine prolapse, like rectal prolapse, organs का अपनी जगह से खिसक जाना, ये सारे स्प्लीन की कमजोरी से होते हैं. तो जब भी हम इनका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे तो हम स्प्लीन के ऊपर फोकस करेंगे. सो लेट्स सी वंस अगेन one thing about the spleen. We are eating the food. Food is reaching to stomach. Stomach receive food. Stomach ने food receive किया. Now what is happening? Spleen is extracting this food and making food chi or grain chi or goo chi. Now this goo chi goes to lungs and combined with air chi. So the combination of goo chi and air chi is becoming jhong chi in the chest cavity. Now
This Zhong Qi is responsible for all the activity of the chest cavity. Got it? Now, the Zhong Qi combined with kidney Qi or the Yuan Qi and becoming true Qi, which circulate in meridian. जो सारे के सारे मेरिडियन में सर्कुलेट होती है. The other name of this true Qi is Zhang Qi. Zhang Qi मतलब true Qi. झैंग, पहले झोंग था, अभी झैंग है. तो झोंग Qi is combining with the kidney and becoming the true Qi. Got it? The true Qi is circulating in all the meridian. अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. आई वांट टू टेल यू वन थिंग. जब हम ब्लड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो टीसीएम में ब्लड फॉर्मेशन को इस तरह से बताया गया है. ब्लड फॉर्मेशन, so first we are eating the food, then it is going in the stomach, then spleen is extracting food chi, स्प्लीन ने इस गुची या फूड chi को एक्सट्रैक्ट किया. नाउ दिस इज गोइंग टू द हार्ट. ये हमारे हार्ट को गई, और हार्ट में जाने की, हार्ट को गई. ये टीसीएम का कंसेप्ट है. द गुची इज गोइंग टू द हार्ट एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस there is an action of kidney chi. It do the blood formation. इससे ब्लड फॉर्मेशन का निर्माण होता है. यानी आप जब टीसीएम का कंसेप्ट देखोगे तो टीसीएम में कहते हैं कि ब्लड बनाना है तो हार्ट की तरफ ले चलो. If you want to make the blood, take the guchi toward the heart and mix with the kidney chi. ये टीसीएम में ब्लड फॉर्मेशन का कंसेप्ट है. So guchi is going in the chest cavity, mixing with the air chi. This is the one path. एक तो पाथ ये बना कि गुची हमारी छाती में गई और उसने एयर ची से कंबाइन किया, और दूसरा पाथ ये बना कि गुची गोइंग रीचिंग टू द हार्ट एंड गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम किडनी ची. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड. ये बहुत ही जनरल कंसेप्ट था. उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा. क्लियर है? अब हम स्प्लीन के मुख्य 6 फंक्शन के बारे में बात करें. द स्प्लीन इज हैविंग मेनली 6 फंक्शंस. दीज फंक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां स्प्लीन की कमजोरी से होती है. Like motor neuron disorder, multiple sclerosis, sorry, not multiple sclerosis, muscular dystrophy, muscular atrophy. कई बीमारियां स्प्लीन की, बड़ी बड़ी बीमारियां स्प्लीन की डिसहार्मनी से होती है. So spleen, as per the TCM, spleen is very unique organ and mainly there are 6 function of the spleen. अगर हमें स्प्लीन के 6 फंक्शन पता चल जाए तो हम बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का निर्माण कर सकते हैं. क्या आप वो 6 फंक्शन जानना चाहते हो? कौन जानना चाहता है? सभी लोग जानना चाहते हैं. सो there are total 6
main functions of spleen. One, two, three, 4, 5, and 6. The function number 1. Spleen is governing transformation and transportation of food. इसका मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड का क्या मतलब होता है? पहले हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। कहते हैं कि यार वो तो जिम गया और उसने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया, सुना होगा आप? उसने 2 साल इतनी इंटेंसिव प्रैक्टिस की एक्यूपंक्चर की और उसने अपनी पूरी प्रैक्टिस को ट्रांसफॉर्म कर लिया। उसने 1 साल पीजी डिप्लोमा की इतनी डीप पढ़ाई की, एक एक वीडियो 3 3 बार देखा, इतने अच्छे नोट्स बनाए, सब कुछ दिमाग में मेमोराइज कर लिया, नोट्स बना के लिख लिया। यार उसकी प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब है बदल जाना। अब मैं कुछ, आई एम गिविंग सम सिंपल एग्जांपल। आटा, आटा आटे को पानी में भिगोया, फिर उसकी ऐसे रोटी बनाई, सेका, और आटा कहाँ था और रोटी कैसी बन गई, पूरा ट्रांसफॉर्म हो गई। So we can see how we are making from flour to chapati. Fully transformation. Transformation means different form. Now see, we are eating the chapati, but finally it becoming blood. Now you can see how the chapati looks round, round, and how the blood looks red, red. ऐसा तो नहीं कि चपाती में कुछ लाल रंग डाल के खाया तो लाल ब्लड बना। आप चाहे लाल चपाती खाओ या नॉर्मल चपाती खाओ, ब्लड लाल ही बने। So this is a transformation. The meaning of transformation, changing the form completely. Okay. So this action is done by spleen. We are eating the food and it is doing very wonderful transformation. It is taking the food, chi out of that food. उसमें से उसने बढ़िया वाला essence खींच लिया. That is called then transportation. Then it is taking this energy, the food, chi, to the chest cavity, to the lungs, to the heart. This is called transportation. So there are very important function of the spleen. Number 1, ट्रांसफॉर्मेशन. नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना. दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन. द सेकंड फंक्शन ऑफ द स्प्लीन इज कंट्रोलिंग द ब्लड. Very important function. We are keeping the blood inside the blood vessels. We are holding the blood inside the blood vessels. We can hold the blood inside the blood vessels. If spleen is strong, if spleen is weak, then blood will go out. There is a bleeding. Like we can see any type of the bleeding disorders, where हम देखते हैं कई बार प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है. अगर टीसीएम में हमें ट्रीटमेंट करना है तो हम स्प्लीन पर फोकस करेंगे, बिकॉज स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल to stop the blood even because of the reduced platelet count or because of anything bleeding from any part. We will work on the spleen because the spleen control blood inside the blood vessels. Very important function. Now in the future when we will be making the protocol of the bleeding that time, especially the low platelet count or the bleeding from the various places, that time we will be thinking for spleen.
Now third and the very important function of the spleen. अभी हमारा तीसरा जो फंक्शन है स्प्लीन का बहुत महत्वपूर्ण है. स्प्लीन कंट्रोल्स मसल्स प्लस फोर लिम्स. बहुत महत्वपूर्ण बात है, फोर लिम्स. यानी स्प्लीन हमारी मसल को कंट्रोल करता है और फोर लिम्ब को कंट्रोल करता है. Oh, I'm not having power in my hands, I'm not having power in my legs, my legs are in the arm or the forelimbs are having some issues. We want to strengthen the forelimbs, I want to strengthen the arm, I want to strengthen the legs, I want to work on the muscles. Muscles are weak, muscle are getting atrophy, muscles pain are there, someone is suffering with a muscular pain, muscle spasm are there. So whenever I want to work on the muscles or the forelimbs means both the arm and both the legs, the both arm and the both the legs getting energy from spleen. तो हम स्प्लीन को ताकत देके हम इनकी ऊर्जा को इंप्रूव कर सकते हैं. Got it? Now the fourth function. The fourth function. Spleen is opens in mouth. ये स्प्लीन हमारे माउथ में ओपन होती है. And also manifest in lips. स्प्लीन हमारे माउथ में ओपन होती है और ये लिप्स में भी मैनिफेस्ट होती है. गॉट इट? अगर ये हमने डायग्राम पहले दिखाया था, ये देखिए डायग्राम इसी के लिए बनाया है. लाइक there's the lips, spleen manifest in the lips, spleen open in the mouth, and here I'm showing spleen is having connection with a thin saliva. So the lips are pink, lips are good, lips looks not much dry. It shows that good health of spleen. If the spleen is disturbed, person will be having problem in the mouth, bad breath from the mouth, bad smell from the mouth, some disharmony in the mouth. उसके सामने पेशेंट को बोलो कि सांस लो और छोड़ो, उसको बोलो मुंह से लो, मुंह से छोड़ो, 10 बार बोलो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पेट कैसा है. उसके मुंह से स्मेल आती है, स्मेल इज कमिंग इफ द पर्सन इज ब्रीदिंग. कभी कभी बहुत गंदी स्मेल आती है, जैसे किसी ने फ्लैचुलेंस की स्मेल होती है ना, ऐसी मुंह से स्मेल आती है जब कोई व्यक्ति एयर छोड़. दैट इज द बैड हेल्थ ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन. So spleen open in the mouth and spleen having connection with the lips. Got it? तो लिप्स को, अगर लिप्स काले हैं तो भी स्प्लीन के बारे में बताते हैं. इफ द लिप्स आर ब्लैक और द लिप्स आर पिंक, they are telling the condition of spleen. Got it? So the fourth and very important function of the spleen, fifth and very important function of the spleen. Spleen raising the chi upward, or we can tell raise yang.
स्प्लीन का काम है ऊर्जा को लिफ्ट करना और यांग को लिफ्ट करना। स्प्लीन कमजोर होगी तो ऊर्जा नीचे लटक जाएगी, यांग नीचे गिर जाएगा। जो फाउंटेन का पानी जो ऊपर तक जा रहा था वो जरा से रह जाएगा। So the spleen is having connection with the raising the chi, raising the yang, or we can tell raising the clear yang. Clear yang. What is the meaning of clear yang? I will tell you. Raising the clear yang. Clear yang का मतलब समझिए। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। कितने लोग बहुत एकदम मजे से सुन रहे हैं? हाथ उठाइए। और कितने लोगों का दिमाग थोड़ा फॉगी है यार, इधर का ये भी चल रहा है, उधर का वो भी चल रहा है, थोड़ा फॉगी चल रहा है, फॉगीनेस, फॉगीनेस चल रही है। सम पीपल माइट बी हैविंग सम फॉगीनेस। इधर का कुछ आ रहा है, इधर का कुछ आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दैट फॉगीनेस है ना। समटाइम इट हैपन विद अस, वी आर द सेम पर्सन, समटाइम वी आर थिंक लिसनिंग वेरी क्लियरली। when we are understanding something very clearly, it means we are having clear यांग। इसको ऐसे समझते हैं कि जब मैंने बोला कुछ, आई एम स्पीकिंग, आई एम टेलिंग यू समथिंग, then it's going like this, reaching to you, to your ear, to your eyes. Okay, then what will happen? आपकी यांग एनर्जी जाएगी और एक ऊपर जैसे वो खेलते हैं ना, ऐसे टच करके आ जाएगी ब्रेन को। द यांग एनर्जी विल राइज अप एंड टच एंड कम बैक। सो वेन एवर यू आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, जब भी हम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इट मीन्स आवर यांग इज क्लियर, यांग इज टचिंग अवर ब्रेन, नर्वस सिस्टम। लेकिन यांग एनर्जी का मतलब है जैसे छोटा बच्चा खूब जंप करता है, कूदता है, भागता है, रन करता है, नो लेजीनेस इन द स्मॉल चिल्ड्रन, दैट इज द क्लियर यांग। बट समटाइम आफ्टर द सपोज आफ्टर हैविंग मील, अब आपने 2 बजे खाना खाया और मैं 2:15 आपकी क्लास लूं, है ना। आफ्टर हैविंग मील एट द 2 o'clock, if I'm taking the class at 2:50, that time your yang energy is not active, that time your yang energy is sluggish, so you will not able to concentrate fully. तो अगर आपको अपना कंसंट्रेशन अच्छा करना है तो वो फॉगीनेस, मजीनेस, unwanted flame should not be there, so that clear yang energy is formed by spleen। स्प्लीन गड़बड़ हो गई तो आपकी यांग एनर्जी में बहुत सारा कफा घुस जाएगा, फ्लेम आ जाएगा, सामने वाला बोलेगा आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। So the spleen is having connection with the clear yang. What I see. So you are asking sometime, okay, can you tell me something how to improve our memory? The answer is strengthen your spleen. What will happen? There is no formation of the unwanted flame, and there will be formation of the clear chi, clear yang energy, and not mix energy. Spleen is weak. Now, whatever energy you are producing, that is the mixing of the flame, mixing of the dampness, then the fogginess, and will start. तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शन नंबर
ये हमारा फंक्शन है, रेजिंग द ची अपवर्ड, रेजिंग द क्लियर यांग अपवर्ड। स्प्लीन का काम है क्लियर यांग को ऊपर तक भेजना। Now the last function, the spleen. Spleen का आखिरी फंक्शन। Spleen is the house of intellect or the ye or the thought process। स्प्लीन आपके इंटेलेक्ट का घर है, आपके थॉट प्रोसेस का स्थान है। आप गंदा सोचते हो कि अच्छा सोचते हो, ये स्प्लीन डिसाइड करता है। इफ स्प्लीन इज वीक तो आप कुछ सोचते नहीं हो, वो थॉट अपना अब थॉट चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। नो कंट्रोल द थॉट्स इफ स्प्लीन इज वीक। अपने आप चलती है, लाइक थॉट प्रोसेस। आई वांट टू डू सम, आई वांट टू वर्क, आई वांट टू डू समथिंग, I will think for that. But if the spleen is weak, even you're lying down, even you want to sleep, even you want to study, even you want to do some work, दिमाग चलते ही रहता है भाई, चलते ही रहता है। अब आप खुद सोचो, जिसका इतना दिमाग इतना चलेगा वो क्या स्टडी करेगा, क्या पढ़ेगा। तो बच्चों का स्प्लीन स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। जो सारे बच्चे हमारे पीजी डिप्लोमा के हैं, उन सबका स्प्लीन स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग अच्छी तरह से सीखें। फिर पेशेंट हमारे सामने आए तो ऐसा ना हो जाए अब क्या करें। सुना तो था कहीं, करें क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, पेशेंट आता है तो समझ में नहीं आता, करो तो करो क्या। तो पेशेंट को बोलो वेट फॉर 30 मिनट, आई एम कमिंग, गो इनसाइड एंड स्ट्रेंथन योर स्प्लीन एंड कम बैक। इफ यू स्ट्रेंथन योर स्प्लीन, और अपना नहीं तो अपने घर के बच्चों का तो करो। अपने घर, आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों, पढ़ते हो, स्कूल में जाते हो, दे आर गोइंग टू द स्कूल, because nowadays kids are having foggy mind, because their spleen, most of the kids having weak spleen. Why? Because their food habits। जो आपके फ्रेंड आके घर में बच्चों को चॉकलेट देते हैं ना, उनको कभी घर पे मत बुलाओ, उनको बाहर से ही बाय बाय कर दो ना। हेल्दी फूड शुड बी। आज एक पेशेंट आया, उसने बड़ी अच्छी बात बोली। पेशेंट टोल्ड मी, माय डॉटर इज 3 years old, 3 or 4 years old, she have never eaten chocolate, and she asking, can 3 years old, can I start giving sugar now? I told, oh, if you're not giving till now, why would you want to give now? Even if you, अगर आपने अभी तक शक्कर नहीं दिया, आगे अभी भी मत दो। So sugar is the slow poison. So nice. It's a required a great control. Okay. तो ये हमारे 6 फंक्शन थे स्प्लीन के। There are 6 functions of the spleen. Number 1, spleen governs transformation and the transportation. We have understood. Number 2, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी समझ गए। और हम we understood the meaning of that, right? Then
Second, we have discussed spleen is controlling the blood. स्प्लीन ब्लड को कंट्रोल करता है, ये हम सबको पता है ना. स्प्लीन लाइक ड्राइनेस, स्प्लीन को सूखा सूखा पसंद है, सूखा. स्प्लीन लाइक ड्राइनेस. Because if the spleen is weak, there is a formation of dampness in the human body. हमारे शरीर में डैम्पनेस का निर्माण होता है, और डैम्पनेस बनती है तो स्प्लीन 6 और स्प्लीन 9 को ट्रीट करना होता है. स्प्लीन 6 एंड स्प्लीन 9. Spleen like dryness, spleen like dry day. Suppose you are doing fasting, you're not eating anything, spleen is very happy. If the person is taking lots of cold drinks, cold juices, raw salad, spleen never like cold and raw food. Raw मतलब जैसे कच्चा खाना होता है ना, जैसे कई लोग कच्चा खाना खाते हैं काफी सारा, नेचुरोपैथी में कच्चा खाना खिलाते हैं, वो अच्छा हो सकता है, नो डाउट इट माइट बी गुड फॉर some people, but it is not good if the person is having weak spleen. Raw food is not good for the person if the person is having weak spleen. But I'm not telling about the fruit. फ्रूट को पका के नहीं खाते, देखो फ्रूट को कच्चे ही खाते हैं. लेकिन सैलेड, if the person having already weak spleen and eating lots of raw salad, lots of cold smoothies, frozen desserts, अगर किसी की स्प्लीन कमजोर है और बढ़िया वो फ्रोजन ऐसे डेजर्ट्स आइसक्रीम्स वगैरह खा रहा है, स्मूथी पी रहा है ठंडी ठंडी, तो उसकी स्प्लीन और कमजोर हो जाएगी. एक बार की बात है, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, रात को 12 बजे मैंने फ्रिज में से तरबूज निकाला, कटा हुआ रखा था, 6 घंटे 4 घंटे से एकदम ठंडा हो गया था, और खा लिया. वो सारे गॉड है ना, जो अपन पढ़ते हैं ना, वो सारे एक्सपेरिमेंट में अपने पर कर चुका हूँ एक एक करके, मैक्सिमम तो हो चुके हैं अभी तक. सब अटैक हो चुके हैं, ठंडे धरती पे सो के वो स्प्लीन कोल्ड अटैक भी हो चुका है, बहुत सारे अटैक. कहते हैं भगवान बहुत सारी चीजें तो फील करा के को बताता है, ले भैया तू खुद फील कर फर्स्ट. The next day morning, my throat got choked and I got fever. I got severe throat infections. Many person, then I have seen when we do lots of exercise, when we go for gym, when we do Surya Namaskar, when we do intensive yogasana, when we are doing intensive physical workout, that time cold water in the maybe these deserts will not affect you. ये चीजें उतनी अफेक्ट नहीं करती, उस समय आपका बॉडी एक अलग मोड में होता है, योर मसल्स आर लिटिल इन द वार्म मोड इन ड्यूरिंग दैट डेज. बट सपोज यू आर नॉट डूइंग दिस, इवन द लिटिल बिट, दीज थिंग्स माइट अफेक्ट योर हेल्थ. हर किसी की नहीं होगी, जिसकी स्प्लीन थोड़ी बहुत वीक होगी उसकी होगी. तो मान लो किसी की स्प्लीन बहुत स्ट्रांग है, तो वो खा लेगा, उसको पता नहीं चलेगा ज्यादा, उसको इतना नहीं पता चलेगा. लेकिन हम सब लोगों की स्प्लीन तो कमजोर होती है भाई, हम सारे एक्यूपंक्चरिस्ट, डॉक्टर्स की स्प्लीन कमजोर मिलती है तो वाई वरी. अब मेरा तो आपको बताओ, एक अगर आपका पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिले तो कैसी वरी हो जाती है अपने को, है ना. ऐसा लगता है कि भैया 10 को रिजल्ट मिल जाए, एक को ना मिले तो उसकी चिंता चलती रहती है, इसको क्या नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं. अब एक पेशेंट है मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर का, पूरी दुनिया में दिखा गया 10 साल से, आज मैंने सेकंड ट्रीटमेंट दिया, बोलता है सर आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है क्या. सेकेंड डे of the treatment, he is having MND, motor neuron disorder, since 10 years.
meet with all the doctors of India. Just on the second day, he's expecting me, asking me, sir, are you seeing some improvement? Is there some hope? He can. So expectations make us okay. Even I have made, मैंने समझा दिया था कल. टाइम लगेगा तभी सर हम एग्री हैं टाइम के लिए. आप जितना टाइम बोलोगे उतना हम वेट करेंगे. आपको आज इंप्रूवमेंट दिखा कुछ? टुडे वाज द सेकंड डे. सेम अभी पेशेंट आता है कैंसर का. थर्ड डे पूछता था, सर आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखा? ही इज सफरिंग विद द ब्रेस्ट कैंसर. ही इज सफरिंग द ब्रेस्ट कैंसर सिंस many years. Expectation are the same. Definitely, I'm not telling they are asking wrong. They are having worries, so they're asking, but we got to go now. Yes. So what happened? Our spleen becoming weak. हमारी स्प्लीन वीक हो जाती है. और फिर खाया आपने ठंडा, तो क्या होगा? स्प्लीन की चीखें निकल जाती हैं भाई. ऐसा लगता है कि स्प्लीन को आपने गंगा नदी के ठंडे पानी में डुबो दिया. कभी ना ठंडी में जाना और गंगा नदी में सुबह सुबह 5 बजे स्नान करके देखना, आपको समझ में आएगा कि ठंड क्या होती है. व्हाट इज द कोल्डनेस. ओके. सो स्प्लीन will not be happy if you take स्नान in cold water. Okay. So in this way, if spleen is good, then it will do wonderful transformation. Entire food will be converted in the food chi. Super transformation. Even you're eating the chapati and salt, namak chapati. Spleen उससे भी बढ़िया ऊर्जा बना देगी. If your spleen is good, this is called transformation. Converting food in the food chi. But if spleen is weak, then bloating after the food, loose stool, tiredness, formation of the dampness. अब ऊर्जा नहीं बनेगी, अब बनेगा फ्लेम, डैम्पनेस, कफ. डैम्पनेस विल मेक अस ओवरवेट. अब वजन बढ़ेगा. स्प्लीन की कमजोरी से तो मोटापा आता है भाई. स्प्लीन, इफ स्प्लीन इज स्ट्रांग, whatever we are eating, it will become food chi, energy, blood. But spleen is weak, then the formation of dampness. तो फिर मटका निकलेगा. एक मटका निकलेगा पेट में, 2 मटके निकलेंगे हिप के पास, और भी मटके निकल सकते हैं बहुत सारे. That is because of the spleen. So if you want that your spleen should not be weak, keep drinking some herbal tea, hot herbal tea. कुछ गरम गरम हर्बल टी पियो. जैसे हर्बल टी मेड बाय तुलसी, पुदीना, है ना, ब्लैक पेपर कॉम्बिनेशन. मैं वाली चाय की बात नहीं कर रहा हूँ. वो तो स्टमक हीट बढ़ा देगी. जो नॉर्मल चाय है, नॉर्मल टी विल इंक्रीज स्टमक हीट. अब सबसे बड़ी बात तो ये है, स्प्लीन को ठीक करो तो स्टमक बिगड़ता है, और स्टमक को ठीक करो तो स्प्लीन बिगड़ता है. स्प्लीन लाइक हॉट, स्टमक इज नॉट लाइकिंग हॉट. वही तो देख, कोविड में हमारे एक फ्रेंड, आयुर्वेदिक फ्रेंड ने बहुत अच्छी बात बोली. कोविड में गरम काढ़े पी पी के पायल्स हो गया. गरम काढ़े पी पी के पायल्स हो गया. कोविड तो नहीं हुआ, लेकिन पायल्स हो गया.
कितने गर्म काढ़े पिए. So when the person is drinking lots of warm thing like black pepper, turmeric, what we are doing exactly? We are strengthening our spleen. So there is no formation of the kapha flame. कफ का निर्माण नहीं होगा. If spleen is weak, then person will be getting swelling, edema. अब देखो I told you 6 function of the spleen. Out of 6 function, I told you spleen control the limbs. Remember? हमने बोला था कि spleen हमारे limbs को कंट्रोल करती है. अब क्या होगा कि व्यक्ति का वजन तो है 60 किलो. पर्सन इज हैविंग 60 kg वेट. Maybe body little flabby because 60 kg weight also person sometimes look like overweight type person. And person is not able to walk. He is walking with the help of walker. They're asking why not walking? I can't take weight on my leg. My legs are weak. I can't take. मतलब एक 60 किलो का व्यक्ति है, वो अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा है. उसके पैर वजन नहीं ले पा रहे हैं 60 किलो का. अभी एक लेडी आके बोलती है लगता मेरा वजन बढ़ गया, 60 किलो हो गया, इसलिए मेरे पैर वजन नहीं ले पा रहे. तो मैंने बोला 100 किलो के लिए कैसे चलते हैं फिर? 100 किलो किलो को दौड़ते हैं भाई. 100 किलो स्पोर्ट सी, वी कैन सी लॉट्स ऑफ स्पोर्ट पर्सन. 100 kg weight is normal for them. They are running, they are jumping, they are doing high jump. If spleen is weak, then limbs become weak. Even the person will not able to take the weight. वजन नहीं ले पाएगा पैरों पे. Head become heavy, breast become heavy, leg become heavy, body become heavy, lots of swelling, mucus. This is because of the spleen. Kapha coming from the throat, kapha coming from the nose, flame coming from the nose, or flame is going with the stool become sticky, चिपचिपा स्टूल बन गया. और गोइंग फ्रॉम वेजाना, वेजानल डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज. These all are because of the weakness of the spleen. तो हमारे स्प्लीन के सारे फंक्शंस हैं. गॉट इट? हमने बात की स्प्लीन कंट्रोल द ब्लड. सम फीमेल हैविंग हैवी ब्लीडिंग or bleeding gums, bleeding under the skin, or any type of bleeding, it might be spleen is weak. क्योंकि spleen, the role of the spleen is keeping the blood inside the blood vessels. तो ये हमने बात की स्प्लीन के बारे में. हम स्प्लीन के बारे में आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे, कल करेंगे. तो उम्मीद है कि कल आप अपने कुछ ना कुछ स्प्लीन को मजबूत करने का उपाय करके लाएंगे. बिकॉज if spleen is good, then you will study well, your concentration memory will be high, your focus will be very good. If your spleen is weak, if your spleen is good. If you don't know how to do that, so wait, we will discuss in the upcoming class. So close the session now. Now see you tomorrow. अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? Good night.